Assalamu alaikum. Education Pedagogy Google Drive Test Series Test number 1. Let's open. अच्छा जी, ये ओपन हो चुका है। पेडागोजी, एंड्रागोजी, हेटागोजी, पियरोगोजी, साइपरोगोजी MCQs हैं। तो क्लिक ईमेल, नेम, email address, password. I think password is changed. I think password is 1212. So the word pedagogy means to lead the child, to guide the child. None of these to educate the child. So I think to lead the child is the correct option. Pedagogy is the study of teaching methods. Word derived from Greek means child, ठीक है. Which type of learning predominantly teacher centered? So यही pedagogy ही होता है क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड है, ठीक है. उसके बाद है he is considered the father of research in education. So ये जोसेफ मेयर राइस हैं. जोसेफ मेयर राइस was great classroom observer हैं. Pedagogy is jointly activity in which the dash has an active role. I think the correct option is learner. What does andragogy means? Andra, adult. So teaching of adults is the correct option. So an adult in training needs to know, which means इसमें 4 options हैं. They are goal oriented and expect it to be relevant. They bring the knowledge they want to share. I think यही correct option है, ठीक है. The attitude of successful teacher towards their student is arrogant, friendly, non-serious, realistic. इसमें ज़्यादा options, ज़्यादातर option जो हमारा जहन मानता है वो friendly है, लेकिन I think realistic is the correct option. The primary task of the teacher is to teach the prescribed curriculum, to stimulate and guide the student learning, to promote habits of conformity to adults' demands and expectations, to provide diagnostic and remedial aid wherever indicated. I think to stimulate and guide student learning. The most important work of teacher is इसमें to organize. I think correct option. Teacher should present information to the student clearly and in interesting way and relate this new information to the things students already know. बहुत ही popular MCQs है ये. Which of the following is the most important factor underlying the success of beginning teacher? I think इसमें his personality and ability to relate to the class is the correct option. Which of the following is most likely to be characterized as an ineffective teacher? So ineffective teacher में इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरे ख्याल में करेक्ट है. I think it is correct. So encourages learner to become more self-directed. And self-learning होती है. So I think it is pedagogy is the correct option. It is self-determined. Pedagogy, learning problem finder and becoming interdependent on those who can help them determine the route. Pedagogy, the role of teacher and coach bring opportunity and foster a culture of collaboration with curiosity. Pedagogy, learners are inquiry driven. ये भी pedagogy है. तो focuses on co-learning or co-creating is pedagogy. Encourages learner engagement in an online environment. Online जब भी होगा वो cybergogy होगा. The first learning center of child is तो first learning mean home. स्कोरिंग गाइड रूब्रिक्स है, ठीक है, मशहूर MCQs है ये. अच्छा, इसमें है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज लर्निंग टू डू ए प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है. अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट लाइफ. अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी द एजुकेशनल प्रोसेस हैज़ टू साइड्स.
I think it is psychological and sociological. Which of the following is dimensional teaching aid? Dimensional. So model होता है. Rousseau educated an education method that consists of removing the child. रोसो अगेंस्ट स्कूल था, तो आई थिंक मेरे ख्याल में स्कूल है, तो आप देखेंगे आपके ख्याल में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड इज होम. द वेरी फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड इज पेरेंट्स. According to John Locke, a child's mind does not contain any innate ideas. Posterior knowledge is a knowledge that is known independently of experience होता है. ठीक है. एक पीरियरी नॉलेज होता है. ठीक है. दूसरा पोस्टीरियरी नॉलेज, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस है. वो दूसरा वाला डिपेंडेंट होता है. द फिलोसफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले स्पोर्ट्स इन एजुकेशन इज, इट इज़ अरिस्टोटल. ठीक है. हु सेड दैट मैन इज ए सोशल एनिमल? तो अरिस्टोटल. The idea of practical learning means education should apply to the real world. The use of technology to enhance the learning process is called in ICT. Who said education refers to the process of discovering the principles of truth, beauty, good and inquiring the individual with them. तो इसमें तो मैं मेरे ख्याल में अच्छा ये अरिस्टोटल ही को क्लिक करता हूँ. So if a child mental age is 5 years old and chronological age of 4 years, then what will be the IQ of a child? तो mental age divided by chronological age multiply by 100. So ये होता है 25 चरी 100, I think 125. What will be the IQ of 25 years old whose mental age is 16? तो 25 चरी 100, 16 चरी 64, 64. तो which of the following is sense is widely used experience in getting large information? ये NTSCT टेस्ट 25/8/2019 में आ चुका है. तो which of the following is sense is widely used experience in getting large information? I think visual. How knowledge is gained through sense of seeing? 75% देखने से आता है. How much knowledge is gained through sense of listening? Listening से 13. तो how much knowledge is gained through sense of touch? इसमें 6. How much knowledge is gained through sense of smell? इसमें 3. तो ये मेरे रिस्पॉन्सेस थे. लेट्स सी कि कितने मार्क्स आते हैं. ठीक है. चलें स्कोर देखते हैं. क्लिक स्कोर. ओ 41/45. तो ये थे मेरे रिस्पॉन्सेस. तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी. तो हाँ, तो इसमें देखें 9 वाला मैंने गलती की हुई है. तो ये फिर देखते हैं. अच्छा 20 वाला, इसमें मैंने सॉरी इसमें मेरा मिस्टेक है, मैंने उसको क्लिक नहीं किया. ठीक है. यानी करेक्ट आंसर मैंने ऑप्शन में नहीं दिया. तो ये भी चला गया. ये सोसाइटी है, आई थिंक स्कूल है, लेकिन फिर भी आप भी देख लें. मेरे ख्याल में स्कूल था. बहरहाल चलें 38 वाला ये सोक्रेटिस था. चलें, तो बाकी आई थिंक करेक्ट है. थैंक यू.